Okay, guys, so let's start with the webinar now. So, hello everyone, my name is Bhumika, and today we are here for the topic how we are going to learn, how we can learn and create our own secret messages and send them to our friends. Also, we have an interesting surprise for you all at the end of this webinar. So, be here and let's begin without wasting any time. So, but this pen, yes, ये वही पेन है इनविजिबल इंक वाला दैट वी यूज टू राइट सीक्रेट मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स यस दैट मैजिक पेन बट अब तो सब कुछ डिजिटल है एंड दिस वाज वन वे ऑफ हाइडिंग मैसेजेस बट नाउ वी यूज स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स एंड ऐसा भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना जिससे हम डिजिटली अपने फ्रेंड्स के साथ मैसेजेस शेयर कर सकें लाइक ऑनलाइन अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन है ड्यू टू कोविड सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट अब डिजिटली हम मैसेज कैसे ट्रांसफर करेंगे सो विल ओपन दिस सीक्रेट मैसेज प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय फनोपिया and we'll go to this project link and there is the working of the project. For now let's skip it and directly launch the experiment. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड इसके अंदर लिखा है एंटर योर सीक्रेट हियर सो लेट्स टाइप समथिंग दिस इज माय सीक्रेट मैसेज आई हैव टाइप्ड दिस अब हम देख सकते हैं कि नीचे एक एनकोड का बटन है अब ये एनकोड का बटन क्या करता है लेट्स प्रेस इट एंड सी व्हाट हैपेंस ओके सो नाउ वी हैव सम सिंबल्स एंड सम लेटर्स बट अब यहाँ पे हुआ क्या हमारे सीक्रेट मैसेज को हमारे मैसेज को दिस इज माय सीक्रेट मैसेज जो हमने टाइप किया था उसको इस एनकोड बटन ने एक सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट कर दिया बट अब तो हम खुद भी ये सीक्रेट मैसेज रीड नहीं कर सकते इट इज सो कॉम्प्लेक्स पर अगर हमें रीड करना हो तो देन इफ वी सी केयरफुली इसने हमें मैसेज के साथ एक की भी दी है एंड हियर द की इज 26 अब इस की क्या इंपॉर्टेंस है की क्यों दी है इसने हमें इस की से क्या होता है जो भी जिसके पास भी ये की होगी ओनली दैट पर्सन कैन रीड द मैसेज हाउ लेट्स सपोज कि आपको यही मैसेज आपके फ्रेंड ने भेजा एंड हो सकता है कि ये मैसेज बहुत लोगों के पास हो बट उसने की सिर्फ जिसको बताई होगी वही ये मैसेज पढ़ सकता है सो लेट्स कॉपी दिस मैसेज and change our tab to reveal because we want to reveal the message. Now we'll paste it and we'll write the key in this key box. So, अब हम अगर सही की लिखेंगे then we can expect कि हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. But let's try कि अगर हम गलत की डालें तो क्या होता है? Okay, so हम 29 की डालते हैं and let's press this decode button. Some more random alphabets and symbols. तो हमें कुछ भी मैसेज पता नहीं चला कि क्या मैसेज था. So that means and that proves कि जिसके पास सही की होगी सिर्फ वही मैसेज दे सकता है. Now let's change the key to right key. That is 28. Now let's press the decode button. So Bhumika, key was 26. It was T26, 26. Okay, let's try it once more. Okay, so let's copy this message and here our key is 18. So let's paste the message and write the correct key and let's press the decode button. So wow, here you can see that it has correctly decoded our message. So isn't that interesting? And also the fun part is you can share this secret message with your friends directly from here using this share button. So you can either use WhatsApp or Facebook or you can directly copy the URL and send it to anywhere. Now I have an interesting activity for you. So I have a secret message for you and you have to tell me what that message was. Also, you might be thinking
that you can't decode the message without knowing the key. So let me tell you the key also. The key is 33. So I would hope that you guys will write the answers in the chat box. Yes, Samriddhi has said you got it. And Piyush also. Waiting for more answers? Yes, you guys are right. This was the message which I encoded for you. Now, interestingly, we are going to make this kind of project only in today's webinar. So I hope that you all are excited for that. But टाइम में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कि पुराने टाइम में इन मैसेजेस का कैसे, इस सीक्रेट मैसेज का कॉन्सेप्ट का कैसे यूज किया जाता था. अब सीक्रेट मैसेज के कॉन्सेप्ट के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं. नाउ वंस अपॉन अ टाइम जर्मनी वाज एट वॉर एंड जो उनकी मिलिट्री थी, जो भी वो ऑर्डर पास कर रहे थे, दे वर गेटिंग लीक्ड एंड एनिमीज को जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाते पता चल जाती एंड जर्मन्स इससे बहुत परेशान थे. नाउ एट दैट टाइम आर्थर नाम का एक पर्सन था जिसने एक मैसेज को सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करने की मशीन बनाई. अब उस मशीन का नाम उसने दिया एनिग्मा मशीन. अब जब जर्मन मिलिट्री को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने कहा अरे वाह, उनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब वो सीक्रेटली मैसेज शेयर कर सकते हैं एंड एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा. अब इस एनिग्मा मशीन की स्पेशलिटी क्या थी? जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट में देखा, हमें एक की मिल रही थी. अब ये की तो हमेशा सेम रहेगी एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए, बट ये एनिग्मा मशीन एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए भी हर रोज की चेंज कर सकती थी एंड दैट वाज इट्स स्पेशलिटी. पर एंड इसके थ्रू जर्मनी ने बहुत सारी वॉर्स भी जीती. बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. जर्मनी की जब दोबारा वॉर हुई तब उनके एनिमीज को पता चल गया कि जर्मनी इज यूजिंग दिस एनिग्मा मशीन. सो एलन ट्यूरिंग, जो कि एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, उनकी हेल्प से उन्होंने इस एनिग्मा मशीन को डीकोड करने का तरीका निकाल लिया. एंड ऑब्वियसली क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज जर्मनी की लीक हो गई तो जर्मनी वो वॉर हार गया. सो दिस शोज द पावर ऑफ सीक्रेट मैसेजेस कि एक सीक्रेट मैसेज एक कंट्री को वॉर जिता भी सकता है और वॉर हरा भी सकता है. सो मूविंग ऑन, अब वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम खुद का सीक्रेट मैसेज कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं. सो कैन वी मेक दैट? यस, ऑफ कोर्स वी कैन मेक दैट एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. बट कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स and let's understand its logic. So, हमारे पास एक मैसेज है. Suppose that message or that word is secret. अब जो हमने प्रोजेक्ट देखा उसके अंदर भी हम एक मैसेज लिख रहे थे, एनकोड बटन प्रेस कर रहे थे एंड वो हमें मैसेज सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट हो रहा था. सिमिलरली यहाँ पे भी वो भी हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही था. यहाँ पे भी हमने सीक्रेट मैसेज को इस ब्लैक बॉक्स में डाला एंड वो हमें कन्वर्ट होके मिल गया. इसका मतलब इस ब्लैक बॉक्स में कुछ मिस्ट्री है. ये ब्लैक बॉक्स कर क्या रहा है? सो लेट्स सी दैट बाय ओपनिंग द ब्लैक बॉक्स. अब ब्लैक बॉक्स को जब हमने ओपन करा तो इसमें से लॉजिक मिला. किस लॉजिक से ये अल्फाबेट्स को या फिर मैसेजेस को एनकोड कर रहा था? सो इट सेज रिप्लेस एवरी अल्फाबेट विद इट्स लेफ्ट अल्फाबेट. अब that sounds a bit confusing, right? अब ये क्या कहना चाहता है? Let's understand it with an example. Now हमारे पास क्या वर्ड था? Secret. And यहाँ पे हमने ABCD लिखी है because basic ABCD तो सबको आती है. So अब हमारा first letter है S. The logic said that we have to replace it with its previous alphabet. So S से पहले हमारा क्या आता है? R आता है. So we are going to replace S with R. Now, हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है? E. E से पहले क्या आता है? D. As you can see, D is highlighted. So, E को हम किससे रिप्लेस करेंगे? D से.
नाउ कैन यू गाइस टेल मी कि सी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? Yes. Samriddhi is saying B. Sheetal is also saying B. Yes, guys, you are right. हम इसको B से replace करेंगे. So, हमने similar logic से सारे letters को अब हम replace कर देंगे. So, जब हम इस logic से हमारे secret word को encode करेंगे, then it will be RDBQDS. अब हमने encode कर लिया and this was simple. But decode करना भी simple है. And अगर हमारे पास किसी ने सीक्रेट मैसेज भेजा हो एंड हमें उसे वापस से एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना हो तो हम डिकोडिंग यूज करेंगे एंड लेट्स सी दैट आल्सो यूजिंग एन एग्जांपल. अब यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं. ऑब्वियसली ये सीक्रेट मैसेज है तो हमें डायरेक्टली तो समझ आएगा नहीं. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ एक्चुअल मैसेज. अब एनकोड करते टाइम हमने क्या लॉजिक यूज किया था? वी वर मूविंग वन लेटर बिफोर. सो क्योंकि ये जो एनकोडेड वर्ड है ये सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड है तो डिकोड करते टाइम वी विल मूव वन स्टेप फर्दर. सो फर्स्ट लेटर B एंड सो इट्स नेक्स्ट लेटर इज C. सो हम किससे रिप्लेस करेंगे? B को C से. नेक्स्ट लेटर इज N. अब N का नेक्स्ट फॉलोइंग लेटर क्या है? O. सो वी विल रिप्लेस N विद O. नेक्स्ट कम्स Q. So Q को हम किससे रिप्लेस करेंगे? R से. Yes, you guys are right. So similarly हम सारे लेटर्स को जब रिप्लेस कर देंगे then as you guys are giving the correct answer, the word is also correct. Now I have another activity for you. So as you can see on my screen there is an encoded message. There is a secret message for you again. And you have to manually decode it. So can you guys do that? Yes, Samriddhi is saying genius. Vivek is also saying genius. Yes, guys, you are right. The correct word is genius. And because we were shifting the alphabets from their places, that's why this technique of encoding is known as shift cipher. As you can see, it has been displayed on the screen also. So now, अब this was one message. So एक मैसेज तो हमने मैनुअली फटाफट कर लिया. बट अगर बहुत सारे मैसेजेस हो, हमारे पास thousands, millions of messages हो, then हम उसको कैसे एनकोड या डिकोड करेंगे? Then तो it is very long process. So यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए आते हैं कंप्यूटर्स. After all, computers are for making our lives easy. So अब हम कंप्यूटर से अगर ये काम एक क्लिक में करवा लें तो हमारा कितना टाइम सेव होगा? बट हम कंप्यूटर से कैसे करवा सकते हैं? यू माइट बी थिंकिंग. सो द आंसर इज कोडिंग. अब कोडिंग क्या होती है? फॉर दोज हु डोंट नो, कोडिंग इज जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. जैसे if I have to give some instruction to you and I'll say write this in the chat box, so I'm communicating with you in certain language. So I'm either speaking in Hindi or in English. So similarly, computer also understands some languages. So अगर हम कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दें, then कंप्यूटर वो समझता है and उस टास्क को वो परफॉर्म करता है. This is known as coding. Now, अब you might be thinking कि how you can do that? You don't know coding, but here is the answer. Panopia has developed Asia's first visual AI platform for those who want to learn coding and who want to learn artificial intelligence. Now, what is the speciality of this platform? The speciality is that you can just create your code by just dragging and dropping the blocks, and it just feels like puzzles. And the best part is you don't need to know any coding. So we'll go to the website fanopia.com and we'll click on this Fun AI ID button. And you can see the platform has opened. So as you can see that there is a toolbox on the left side. अब like mechanic के पास एक toolbox होता है
के अंदर वो सारी चीजें रखता है, लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, जैक्स। एंड सिमिलरली हमारी कोडिंग जर्नी में ये हमारा टूल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। Now, without wasting any time, let's create our project. So, I am not going to drag each and every block, but let's load the project blocks and I'll explain you what that is. Now, यहाँ पे मैंने हमारे ब्लॉक्स कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जैसे हम मैनुअली एनकोड कर रहे थे या डिकोड कर रहे थे, वैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे। जस्ट द डिफरेंस इज वी आर यूजिंग ब्लॉक्स हियर। सो द फर्स्ट पार्ट, एज यू कैन सी, इसमें हमने लिखा है मैसेज को हम एक पिंक ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं। अब ये पिंक ब्लॉक क्या है? पिंक ब्लॉक इज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक अ कंटेनर। सो हमने यहाँ पे हमारे मैसेज को जो कि है सीक्रेट, उसको इस वेरिएबल ब्लॉक के साथ अटैच किया है। एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट लाइक जॉइनिंग पजल्स, सो यू कैन हैव द फील ऑफ दैट। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, द मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट में हम मैनुअली जब कर रहे थे एनकोड, तो क्या हो रहा था? हम हर लेटर को एक एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर रहे थे। सो दिस सेकेंड पार्ट ऑल टुगेदर इज डूइंग द सेम टास्क। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने -1 किया है। तो माइनस, वाई माइनस? बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट 1 स्टेप बिफोर। नाउ द थर्ड पार्ट, द प्रिंट। सो अब कंप्यूटर ने अपने पास कैलकुलेट कर लिया जो भी उसको आंसर स्टोर करना था, बट अब वो हमें कैसे दिखाएगा? सो फॉर दैट वी यूज दिस प्रिंट ब्लॉक। अब इस प्रिंट ब्लॉक के साथ हम जो भी चीजें अटैच करते हैं, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सो अब इस कोड को हम ज्वाइन करते हैं, इन सारे ब्लॉक्स को, एंड वी आर गोइंग टू प्रेस द रन बटन टू सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। अब सीक्रेट, हमारा वर्ड था सीक्रेट, एंड हमने इसी को कन्वर्ट किया था RDB QDS में, एंड यहाँ पे भी हमारा सेम आउटपुट है। See, RDB QDS, and we have same output on the output screen also. So that means our logic is perfectly correct. अब हमने एनकोडिंग की बात कर ली, बट डिकोडिंग का कोड कैसा होगा? डिकोडिंग के लिए हम क्या कर रहे थे? पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। डिकोडिंग के लिए हमें क्या करना था? एक स्टेप आगे मूव करना था। सो हमने सीक्रेट को रिप्लेस किया, एंड अब हम +1 करेंगे बिकॉज हमें एक स्टेप आगे मूव करना है। So now let's run this and see सही decode हो रहा है या नहीं। Yes, see it is correctly decoding and we have got our original word, that is secret. Now अब ये तो सिंपल था। अब हमने जो प्रोजेक्ट ट्राई किया था उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस एनकोडिंग उसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हुई है। इसके अंदर हमने एक अल्फाबेट शिफ्ट करा है। We can make it more complex by shifting 2 alphabets or by using any other logic. Similarly, let's see now the project section, and we are going to open the code of that project which we tried in the starting. So here you can see there are 2 buttons, launch and code. So launch button will launch the project and code button will show you the code window. So here are the blocks which have been used to create this project. Now, not only this kind of project you can create in this IDE, but you can also create deep learning. You can also create artificial intelligence projects using this. So there are different kind of projects we have already made for you guys. So let's go into the project section, and here you can see there are different projects which are based on artificial intelligence. With artificial intelligence, let me just show you an example of this Mask-it-on project so that you can know the power of AI we have. So let's launch it, and when we'll press the start button, as you can see, so अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि
पर्सन ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। अब मास्क नहीं पहना था, देन द बॉक्स वाज रेड। अब मास्क पहना है तो देन द बॉक्स वाज ग्रीन। सो अब ये हमें बता रहा है कि मास्क पहना है पर्सन ने या नहीं पहना है। अब ये तो मशीन है, ये कैसे बता सकती है, यू माइट बी वंडरिंग। सो सिंपल लॉजिक इसमें अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं तो यहाँ क्या किया है हमने, जैसे हम एक बेबी को सिखाते हैं एक कैट और डॉग की इमेज दिखा के दैट व्हाट इज द डिफरेंस, सिमिलरली हम कंप्यूटर को भी इमेज के थ्रू सिखा सकते हैं। ये हमने कंप्यूटर को दिखा दिया कि पर्सन बिना मास्क के कैसा दिखता है एंड मास्क पहन के कैसा दिखता है। सो अब कंप्यूटर सीख लिया एंड इसी बेसिस पे वो हमें रिजल्ट्स दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोड भी है उसी सेम प्रोजेक्ट का, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज ऑल बीन मेड यूजिंग द लॉ। And you can also create similar projects on your own using this platform. And for your to enhance your curiosity, we have this projects playground section in which you can try the projects yourself. Now, coming on to the best part for which you all were waiting, surprise time. Yes. So, today at 8 p.m. we are organizing a scholarship test, and we will be giving scholarship to the top 2 scorers who will be giving the test and on any course just on the website. So to participate in that test, you just need to fill the form with whose link has been shared in the chat box, and for further updates you can join our WhatsApp group, or if you want to contact with us directly, you can choose any of the methods in the screen. Now, if you guys have any doubts, you can go ahead and write in the chat box, and we'll be happy to answer them. Okay, so Muskan is asking when is the next webinar. So Muskan, you can join our WhatsApp group and all the updates will be shared there. Any other questions? Okay, so Nikhil is asking, can you talk about what kind of AI blocks are there? So, okay, let's open the platform again. So, talking about artificial intelligence, we have machine learning blocks, we have deep learning blocks. As you can see, they are in categories in which deep learning is divided into. So, we have CNN, we have RNN, we have LSTM, and moreover, we also have transfer learning. Also, we have already created different machine learning algorithms here. So you just need to drag their blocks and you are ready to create your own AI models. No need to learn any code. But if you are still interested in the code, you can see that on the right side, there is a code window which is showing you the blocks code. So you can explore that also. So Samriddhi is saying, will we not learn how to code that project? Samriddhi, we will be sharing this workbook in the WhatsApp group only. And if you want, you can see that how it works. For your information, if you will right click on the block, you can see a help button. And if you will click that, a video will pop up and that will show you how you can use that block. So what's the procedure after filling the scholarship? So we will be sharing the test link with you guys, whosoever will be filling up the scholarship form.
and then you can attempt it today at 8 p.m. Just to give you one more information about the scholarship exam, there will be mental ability questions, there will be logical reasoning questions, and some questions related to this webinar also. So Ramesh sir is asking, I have an open secret message. How can it be coded? So the message is, Bhumika made a great presentation. So can Sachin, you please show how this message can be coded using our... Actually, he is appreciating us. Thank you so much, Ramesh sir. Thank you, sir. Bhumika, can you also talk about, how would you conduct live classes? Any lesson journey or something? Okay, so let me share that. Just a second. So, Samriddhi is asking, you will not make us understand the use of block, means like how will the classes work. So, Samriddhi, due to shortage of time, we could not tell the actual working behind the block. So, if you want to know that, you can visit the website or you can just directly contact us. Yeah. Or you can join the WhatsApp group and you can ask the queries there also. So as Nikhil sir mentioned, he was talking about the class journey. So we provide personalized learning to, if you want to learn how to use our platform, then we provide personalized learning for that. And you can learn Python and artificial intelligence in our courses. Next, we have a course brochure, detailed course brochure, in which every class has a story mission and a takeaway, because when you weave something with the story, then it has a different impact. And when you directly tell something to someone, then it is not of any use. So we have a course brochure for this, but if for every class journey also we have this class journey to excite the students. Like if I just explain you this class journey, then here this is the takeaway. Here we have mentioned what will the child learn in that class. Next, here in this bold area, it is written what kind of story mission the student has to complete. So we teach everything using story missions. So we weave a story, like we give a challenge, we give a mission to the student, and so in this class, the student's mission is to guide a bird to the nest. So now the student to think. Now the student has to develop his cognitive skills so that he can think how can he accomplish his mission. Then after telling the story, we come on to the intuition of if-else. We tell the student that how if-else work. And then after solving some questions, after giving some challenges to the student, and then telling how the code actually works, we have some work it out problems, we have some missions, other story missions, other tasks which the student has to complete. And at last in the class we have this Q&A where the student can ask anything he wants. Moreover, this is the class journey and it is also sent to the parents, so that the parents are also know what kind of learning we are providing. Also, we have this remarks section at the end of every class journey,
So the class performance is also tracked during the course. So I hope that answers the question. So guys, we have a feedback form also, and its link has been shared. So I request everyone to fill that. I would like to add one more thing, Bhumika here. Thanks for the wonderful session, and thank you everyone for joining and taking the time out. The whole sole purpose and the mission of Fanopia is that we are able to teach artificial intelligence and technology skill sets in a very lucid and a visual way. There are IDEs today which exist in the world which are visual, but they are only limited to Python. There is no IDE which you have today in the world which can actually teach kids and teachers artificial intelligence in a simple, lucid way. Uh, and when we conducted our market research across not only in India but across a couple of countries, we realized that there has been a lot of vibe about AI as a critical skill set, whether at the government level or at the school level, and for parents. But uh, the problem was that visual institution was missing, and mathematics people find a little hard. So the beauty of Fanopia is that you can either use the code screen or use the visual screen. We teach using both the methods. However, your initial early steps to artificial intelligence is using a drag and drop approach, which allows you to transcend and build better solutions and in a more intuitive way. I think, although in the interest of time, Smriti, I understand that we unfortunately couldn't teach you how to code the cipher, the cryptography. Maybe we can spend 2 more minutes and Bhumika just show, and then we can end the session, guys. Any other feedback, please be open. You can use audio, audio, video, or over the form. And first, Smriti, Bhumika, can you just walk through again that cipher just for 2 minutes? Yes, sir. Sachin, can you please share the screen? Just a second. I'm sorry, what should I be sharing? Just show how the secret message code works. Code. Okay. For Smriti. I guess Smriti left. Anyway. So actually left. Yeah. Then it's fine. Any other questions, guys? So the idea was when you drag and drop, it visually creates the coding blocks. And obviously, this is more of logical concepts if and else. We can include, and I would like to have feedback over here from all of you. We would love it. We purposefully didn't want to include everything in the webinar because we wanted you. However, do you guys think that we should run through some more programs, or this length is appropriate? Give us a sneak peek overview. Any comments there? You guys can type also on the chat. Yeah, I think everybody seems satisfied. Nikhilji, I believe that if remember earlier, some 20 years ago, around 25 years ago, when the computers, they were not GUI based, we used to work on DOS based commands. And after that, when the GUI came and we switched to using mouse instead of using keyboard for everything,
So, this platform also, I understand that the basic purpose here was to display that how we can use these technologies using this drag and drop, and we didn't go directly into the coding part of it. Because sometimes the coding part, can overwhelm the person also. You need to have so many things. So this is in a way a next step to that situation in which the era of, and very soon Professor M.M. Pant, who is our mentor, is coming up with a new philosophy of how we can self-learn. I believe that this platform will allow not only the students, but anyone, parents, teachers also, as how on their own they can take benefit of it and use the AI based technologies for learning the content, for doing some activity, for creating some application for themselves, starting with works and going on to the complex things from the. Anyway, the code is visible on the right, so any person can see the code, and from there they can practice it by taking that code and running it in real time in their own uh, compilers and other things from there. So I think that way, yes, like you can see now it is running on screen. So it gives you that opportunity. That is why we have the both visual medium and the code medium, and it's a transition phase where people can first have a low hanging fruit of visually building the intuition and then going to the code. In the live classes which Bhumika was showing about, which are conducted, like we said, every class has been specifically and scientifically curated using lesson journey in capsule size, digestible size, and in an interesting, engaging way, the content. And in that each journey, every concept is well thought through and taught and reinforced for every child. So we have made sure that that happens, and that is the reason lesson journey Bhumika was showing you at that point of time. So obviously, we would love to teach more, on this, and we are going to have regular webinars. It will be floated so that everybody can join and celebrate, coding and algorithmic logic and artificial intelligence. And sooner we would be also launching other courses on it, on design thinking and innovation, which are there on the pipeline. So thank you very much, everyone. And Nikhil, just one more point. Miss Shitu Khanna has also joined our session. She is principal of Innocent Heart School in Punjab. And I hope that she finds this platform interesting and she can ask her students also. So Bhumika may like to share the details of the platform with Shituji. And I see my good friend Vivek Jeswara is also there. He is also a wonderful person. When I went to Amritsar, he took a great care of me. So I hope that they will also, provide their feedback on how students can use this platform in a fun way. That is the basic purpose here. As the name is Funobia, means do it, make the learning as a joyful activity, not as a burden कि सीखना ही है क्योंकि syllabus में है इसलिए सीखना है. Absolutely, sir, and welcome Vivek ji and Jitu ji. Thank you for taking time out, and we would love to share the login also, as well as any doubts you have. Please reach out to us on the WhatsApp channel or directly to Bhumika and team and to me, and we will ensure that the learning experience is awesome. I mean, that's why it's Funopia. All right, I think Bhumika, you can have the concluding comments. Okay, so thank you everyone for joining. I think we will be organizing next webinar soon. So thank you all for joining, and we'll see you in the next webinar also.